Hello everyone, welcome to Guidely. This is Aditya. OICL AO examination is over, right? And now the next phase is going to be interview. So it is very necessary that you have to keep ready your interview documents, means the document which are required to present on the day of interview. तो इस वीडियो में आपको मैं प्रॉपर कंप्लीट लिस्ट दे दूंगा कि आपको आपके इंटरव्यू वाले दिन क्या क्या डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करने हैं, सो यू कैन कीप देम रेडी इन एडवांस. ठीक है. सो अराउंड 3 times of the vacancy, it can be more than 3 but at least 3 times of the vacancies candidates are going to attend the interview. और वेटेज होगा आपका 80-20. 80% मार्क्स विल बी द वेटेज टेकन फ्रॉम योर मीन्स एग्जामिनेशन, मीन्स योर रिटन एग्जामिनेशन. 20% will be directly from the interview. So prepare well for interview. You can take the full support from OICL interview batch listed on the Guidely platform. I will be taking the dedicated live classes for your OICL interview preparation. Along with that, insurance awareness, current update regarding insurance, all the important topic like principle of insurance, complete profile of OICL, everything will be covered within the batch along with 2 mock interview. चलिए अब आते हैं डॉक्यूमेंट्स पर, बात कर लेते हैं एक एक करके. आपको क्विकली सारे डॉक्यूमेंट्स बता देता हूं. सबसे पहला डॉक्यूमेंट होगा आपका प्रिंट आउट ऑफ इंटरव्यू कॉल लेटर. सो इट विल बी अनाउंस्ड वंस योर इंटरव्यू डेट्स विल बी आउट. सो आपका एक इंटरव्यू कॉल लेटर रिलीज होगा, दैट यू नीड टू डाउनलोड एंड दैट प्रिंट आउट यू नीड टू टेक. Along with that, valid system generated printout of online application form. अब इसमें काफी बच्चों को कंफ्यूजन होगा. सर actually I missed to say my online application form is the form of OICL which you have filled, and I know that most of you have not saved it. होंगे बहुत से बच्चे जिन्होंने सेव नहीं कर रखा है. Don't worry, they will reactivate the link before the interview, few days before the interview to download it again. तो ये लिंक आपका रीएक्टिव हो जाएगा, तो इसके लिए टेंशन मत लेना. ठीक है. सो दे विल रीएक्टिवेट द लिंक. फिर आता है आपका प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ. इसके लिए सबसे बेस्ट होता है आपका क्लास 10th मार्कशीट और योर बर्थ सर्टिफिकेट, एनी वन ऑफ द डॉक्यूमेंट. मैं यहां पर लेकर चल रहा हूं क्लास 10th मार्कशीट. सो क्लास 10th मार्कशीट आपको लेकर जाना है और बर्थ सर्टिफिकेट, एनी वन ऑफ देम. फिर आता है आपका फोटो आईडी प्रूफ. फोटो आईडी प्रूफ यू कैन कैरी योर आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस. ड्राइविंग लाइसेंस शुड बी वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस, नॉट द लर्नर्स लाइसेंस, वो नहीं चलेगा आपका. सो आधार कार्ड, पैन कार्ड और डीएल, एनी वन ऑफ द डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड. ओरिजिनल अलोंग विद द जेरोक्स. ओरिजिनल और जेरोक्स आपको ले जाने होते हैं. इफ यू विल मेक द सेल्फ अटेस्टेड, यहां पर लिखा हुआ है देखो, सेल्फ अटेस्टेड, ऑल द डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड ओरिजिनल अलोंग विद द सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज. तो एटलीस्ट आप 2 कॉपीज इसके रेडी कर लेना. ऑल द डॉक्यूमेंट 2 कॉपीज यू नीड टू क्रिएट. एंड सेल्फ अटेस्ट मींस यू नीड टू डू द सिग्नेचर एट द बॉटम. आपको खुद साइन करके सेल्फ अटेस्ट करना है, किसी ऑफिसर से जाकर अटेस्टेड नहीं करवाना है. क्लियर है. गजेटेड ऑफिसर से अटेस्ट नहीं करवाना है. यू नीड टू साइन एंड डू द अटेस्टमेंट. After that, class 10th mark sheet, which you are already carrying as your birth certificate proof. Then class 12th mark sheet, graduation mark sheets, along with that graduation degree. Now, again on the graduation degree, few of you will say that, sir, I have not collected my graduation degree till now. What to do at this moment? At present, the day I am making the video, अभी आपका डेट्स आउट नहीं हुआ है, so you can take at least provisional degree from your college. If you will have provisional degree at the time of interview, they will allow you to attend the interview. आपको परेशानी नहीं होगी. You should have at least provisional degree with you at the time of attending the interview. तो आपके class 10th, class 12th and graduation, all the semester wise or year wise mark sheet along with that graduation degree is required. If you don't have degree of PG is fine. PG का degree नहीं है चल जाएगा, but graduation degree is must. Then caste certificate. If you have applied for SC, ST, OBC, EWS, any category, then you need to carry the certificate of that also. तो उसका certificate आपको ले जाना जरूरी है. They will not allow you to attend the interview mainly in 2-3 cases. One, if you don't have degree. Second, if you don't have your caste certificate. If you have applied from unreserved, then it's fine. There is no unreserved certificate. Otherwise, if you have applied from SC, ST, OBC or EWS, then you should have your certificate along with you. उस केस में आपको सर्टिफिकेट लेकर जाना पड़ेगा. In case of
PWD, that certificate is necessary. अगर PWD है तो उस केस में आपको सर्टिफिकेट नेसेसरी है, वो जरूरी होगा. And one more very important document, that is NOC. NOC. If you are already working with any bank or you are working with any other PSC, state government, central government, it means you are either working with any government sector or government department, then you need NOC for attending the interview. उस केस में आपको NOC चाहिए होगा for attending the interview. If you have filled in your application form, then it is must, it is necessary to present the NOC. So for example, you are working with SBI and now attending the interview of IOCL, then you should have NOC with you on the day of interview. तो ये आपके major documents थे which is necessary to attend the interview. यहाँ पर clearly लिखा हुआ है candidate will not be allowed to appear in the interview if they are failed to produce the relevant document mentioned above. तो ये document आपको mention, मतलब ये document आपको present करना जरूरी होगा. So this is the complete list of document which you need to keep ready from now onwards. Prepare well, practice well, go for the batch, confidently attend the classes, attend the mock interview, then go for your interview properly. All the best from my side, guys. Do write in the comment box on which topic you want to make me the next video. Take care. Jai Hind. All the very best.